Good evening, everyone. Thank you for joining with us on yet another webinar. Today's topic will be regarding a company, Man Industries, and where we'll look to understand the company's business model and its future growth prospects. Today, I'm joined with my colleague Harsh Vasa. He will be uh, try and explain it to you. He'll explain it to you the investment rationales behind the company. And so, yeah, without wasting much time, let's dive into it. So, before starting with the gist on the company, just a tutorial on how you can, access our reports. So, our reports are available on our website, which is www.sbisecurities.in. These reports are available pre-login, so you do not have to log in or have an account to view our reports. So when you log into the website, you can see I'm sharing my screen. You have an option here or a tab which says research. When you click on it, you'll get a sub tab wherein you can click on fundamental research, and it will take you to our fundamental research page wherein you can scroll down and see the various reports that we release on a regular basis. The first one being the daily morning report, which is shared daily, as the name suggests, before the market opens, and it gives you a gist about what could be the key actionables that could define the trade today in the market. Similarly, we have a lot of other products, and when you look at the last option, which is IPO notes, we try and cover every major IPO that is on the main board. So we have a lot of IPO notes that we can refer to. And for today, we are going to look into the thematic reports tab, wherein the company Man Industries, you can see on the second page, we have a report named Man Industries India Limited IC, which is an initiating coverage report. So now when you click on view PDF, you will see that the report opens in a PDF form. And on the first page, you'll see itself that the branding is under the umbrella of Rising Stars. So this is a product umbrella that we have come out with, under which we cover companies that are uh, basically small cap or mid cap companies which have exponential, or I could say robust growth potentials, and we see that they could be growing into a CAGR of 15-20% or whatsoever. And these are the companies which are in a relatively growing industry or are industry leaders in their particular sectors. So these are the companies which we initiate a coverage on and are branded under our product name Rising Stars. So these companies that we research and provide a view on are basically researched with the target capital in mind of 25 to 30% of upside, and with an investment horizon of 12 to 18 months. So that being said, this was the whole idea behind our branding of Rising Stars. So moving on, let us now start with our main topic, that is My Industries. So yeah, over to you, Harsh. Yeah, thank you, Shubham. So today हम लोग मान इंडस्ट्रीज के बिजनेस मॉडल पे बात करेंगे कि ये कंपनी करती क्या है और इसके आगे के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है कि क्यों कंपनी आगे जाके अच्छे से प्रॉस्पर करेगी. सो वी हैव सर्टेन इन्वेस्टमेंट रैशनल्स बीइंग मेंशन्ड. सो पहले सो मैं अब बिजनेस मॉडल पे बात करूंगा एंड माय कलीग विल टेक ओवर ऑन द इंडस्ट्रीज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट. सो अब बात करते हैं मान इंडस्ट्रीज पे, जहां हमने इनिशिएट किया है ये एट प्राइस ऑफ ₹448 and having a target price of 660, showing an upside potential of 47.3%. And disclaimer is that कि ये जो stock है वो only cash में buy करना है, और not any product. And ये जो idea है, investment idea, वो long term investment idea है of a duration of 12 to 18 months. So I'll just once again clear that ये जो long term investment idea है with a horizon of 12 to 18 months. अब let us start कि ये company करती क्या है. So मान इंडस्ट्रीज जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है किसकी ऑफ लार्ज डायमीटर कार्बन स्टील लाइन पाइप्स, जिसमें एल्सो कवर होता है, एचसो कवर होता है और ईआरडब्ल्यू. एल्सो जो है वो लॉन्गिट्यूडनल सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पाइप होता है जो हाई प्रेशर और क्रिटिकल सर्विस में यूज किया जाता है. सेकेंड इज एचसो, जिसका फुल फॉर्म है हेलिकल सबमर्ज्ड वेल्डेड आर्क, हेलिकल सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड, जो कि वो लार्ज डायमीटर पाइप के एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है एंड इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. एंड द थर्ड इज ईआरडब्ल्यू, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डेड, और ये जो है पाइप वो स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब में यूज किया जाता है.
एंड ये कंपनी तीनों प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है विद एलसो एचसो एंड ईआरडब्ल्यू। और ये जो प्रोडक्ट है वो काफी हाई प्रेशर ट्रांसमिशन एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, जैसे कि ऑयल एंड गैस है, जिनमें पेट्रोकेमिकल्स, वाटर, हाइड्रोकार्बन्स, सीजीडी सेक्टर जो है, ड्रेजिंग एंड फर्टिलाइजर्स। सो ये सब हाई क्रिटिकल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। अब ये जो कंपनी है इसके पास करीब 3 डिकेड्स की एक्सपीरियंस है, एंड ये कंपनी के पास 2 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि एक लोकेटेड है अंजर गुजरात में, एंड सेकंड जो है वो पीथमपुर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और इनकी जो कंबाइंड टोटल कैपेसिटी है वो करीब 11,75,000 टन पर एनम है। एंड ये जो फैसिलिटी है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्वालिटी स्टैंडर्ड जो एपीआई जिसने ले किया है, जो कि एपीआई का फुल फॉर्म है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, सो द कंपनी होल्ड्स दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर लाइन पाइप्स फॉर हाइड्रोकार्बन एप्लीकेशन। सो इसी के वजह से ये कंपनी की जो खासियत है उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कस्टमर बेस है, जो कि 30 नेशंस प्लस स्प्रेड आउट किया गया है। एंड कंपनी के डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली वेल प्लेस क्लाइंट्स है, जैसे कि आईओसीएल है, एचपीसीएल है, कुवैत ऑयल कंपनी है। सो ये था कंपनी का जो ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं कि हमें ये कंपनी अच्छी क्यों लगती है। सो मूविंग ऑन टू द इन्वेस्टमेंट रैशनल। सो पहला रैशनल है ये कंपनी का कि ये कंपनी है ना स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप सेगमेंट में फोरे कर रही है, और एक नया प्लांट, ग्रीनफील्ड प्लांट जो है वो बना रही है जम्मू में, जो कि कथुआ में प्लेस्ड है। एंड ये जो है अपनी सब्सिडरी के थ्रू सेटअप कर रही है ग्रीनफील्ड प्लांट, जिसका नाम है मान स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स। एंड इसका जो करीब केपेक्स रहेगा वो करीब 564 करोड़ का रहेगा, जो कि फंडेड रहेगा बाय 70% डेट एंड 30% इक्विटी। एंड जो कैपेसिटी रहेगी वो 20,000 मेट्रिक टन पर एनम है। बट अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट अपडेट आया था जो कंपनी का 1Q FY26 था, वहां कंपनी ने 20,000 से 22,000 तक एक्सपैंड कर दिया अपना कैपेसिटी। एंड ये जो कैपेसिटी है 20,000 टन की, इससे कई सारे बेनिफिट्स है। सो मैं एक एक बेनिफिट आपको बोलता हूँ। जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है कि it will get a receipt of 3x of investment made in plant and machinery in 10 years in form of GST credit with a maximum cap of rupees 90 crores per year. So इसका मतलब है सपोज जो प्लांट एंड मशीनरी जहां पे वो रहेगी, सो करीब ये प्लांट एंड मशीनरी 350 करोड़ का है। सो कंपनी को उसका 3 टाइम्स जीएसटी रिबेट मिलेगा, जो कि 1050 करोड़ है। बट इसमें कैच है कि कंपनी को मैक्सिमम 90 करोड़ पर ईयर ही मिल सकता है फॉर 10 years, मतलब 900 करोड़ मैक्सिमम जीएसटी का इंसेंटिव मिलेगा। एंड अभी देखा जाए सो कंपनी जो भी सेल करेगा लाइक फ्रॉम FY27 से, लाइक ये जो प्लांट है वो करीब 3Q FY26 या 4Q FY26 से ऑनलाइन ऑन स्ट्रीम आएगा। बट कंपनी का जो सेल्स है वो FY27 से जनरेट होना स्टार्ट करेगा। सो ये जो कंपनी जो सेल्स करेगी उसका जो 18% जीएसटी रिबेट है वो कंपनी को फुल बेनिफिट मिलेगा। बट वहां पे जो कैप है वो 90 करोड़ पर ईयर का है। सो कंपनी कैन हैव अ मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ 900 करोड़ व्हिच इज स्प्रेड आउट थ्रू 10 इयर्स। सो सेकंड बेनिफिट है कि कंपनी को 6% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। एंड थर्ड बेनिफिट जो है उसका जो सब्सिडाइज पावर कॉस्ट है वो करीब 4.5 पर यूनिट रहेगा, एंड हैविंग अ कंसेशनल रेट ऑफ 15%। अब ये जो प्लांट है इसमें हमने करीब 20% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वी हैव अज्यूम्ड फॉर FY27, जो कि 170 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। एंड वहां से FY28 में the production and sales volume will ramp up, and we expect 34% capacity utilization by FY28, having a revenue of 306 crore। एंड ये जो स्टेनलेस स्टील जो होता है पाइप, इट इज अ वेरी नीश प्रोडक्ट, एंड ये कंपनी की जो रियलाइजेशन होती है वो करीब 4 लाख रुपीस पर टन टू 4.5 लाख रुपीस पर टन अवेल होती है। एंड ड्यू टू दिस कंपनी का जो ये सेगमेंट का जो एबिटा है वो करीब 63,750 पर टन वी अज्यूम इट इन FY27, जो कि इंक्रीज होकर 74,250 तक जा सकता है इन FY28। एंड ड्यू टू दिस वी एक्सपेक्ट कि कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी है वो बूस्ट होएगा। सो दिस वाज द फर्स्ट रैशनल वेयर वी फील कि कंपनी की जो सेल्स है काफी इंक्रीज होएगी इन FY27 एंड देन रैंपिंग अप टू FY28 विद अ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ 20% एंड देन टू 34%। जो सेकंड रैशनल है वो है कि कंपनी
3 लाख मेट्रिक टन्स पर एनम का एसओ ग्रीनफील्ड फैसिलिटी सऊदी अरेबिया में इन्वेस्ट करी है इन दमम, एंड इसका जो केपेक्स रहेगा वो करीब 600 करोड़ रहेगा, which is also funded through 70% debt and 30% equity. एंड इसका रीजन ये है कि कंपनी सऊदी अरेबिया में इसलिए जा रही है बिकॉज वहां पे वाटर एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए काफी इंफ्रा बूम है, and there are many orders being coming out from Saudi Arabia. That is why company has aimed and try to move on to Saudi Arabia. एंड यहाँ पे भी ये सेम ये प्लांट ऑनलाइन ऑन स्ट्रीम जाएगा बाय 3Q एंड 4Q FY26, आइदर 3Q और 4Q. एंड वहां पे जो एसओ का मार्जिन है वो इंडिया बेस्ड 9% to 11%. However, Saudi Arabia में company is getting an edge and may achieve a EBITDA margin of 12 to 14%. एंड इसी के कारण हमने जो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी है, सो वी हैव अज्यूम्ड द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ 50% इन FY27 एंड रैंपिंग अप टू 55% इन FY28. सो वी एक्सपेक्ट कंपनी यहाँ से ये सेगमेंट से करीब 1250 करोड़ एंड 1440 करोड़ की टॉप लाइन अचीव करेगी, एंड क्लॉकिंग एन एबिटा मार्जिन ऑफ 12.5% and 14% in FY27 and FY28, thereby contributing 156 crores and 200 crores over there. सो ये थे कंपनी की मेन टॉप 2 रैशनल्स, जो कि फर्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील प्लांट जम्मू में कंपनी ली डाउन करेगी, एंड सेकंड है सऊदी अरेबिया में एस्सा प्लांट ऑफ 3 लाख मेट्रिक टन्स पर एनम. सो इसका जो ओवरऑल केपेक्स है वो करीब 1164 करोड़ रहेगा, जो कि 70% डेट एंड 30% इक्विटी से मीट होएगा. सो इसी के कारण कंपनी ने करीब 255 करोड़ रेज किया है फ्रॉम नॉन प्रमोटर्स एट अ प्रेफरेंशियल इशू ऑफ ₹328 पर शेयर. ये लाइक 2 months पहले ही आया था ये प्रेफरेंशियल इशू, एंड कंपनी हैज रेज्ड एंटायर कंपनी हैज रेज्ड 255 करोड़ फ्रॉम नॉन प्रमोटर्स. एंड प्रमोटर होल्डिंग जो है कंपनी ने सब्सक्राइब द प्रमोटर्स ने सब्सक्राइब किया है अराउंड 12.2 लाख वारंट्स एट 328 पर शेयर ऑन 2 August 2025. सो इसी दोनों के थ्रू कंपनी 295 करोड़ मोबिलाइज करेगी थ्रू इक्विटी इशुएंस फ्रॉम प्रमोटर एंड नॉन प्रमोटर्स, एंड रेस्ट विल बी फ्रॉम डेट जो कि 70% रहेगा. इसी के कारण जो डेट है करीब अभी 450 करोड़ to 475 करोड़ है, और ये रेज होके अराउंड इट विल इंक्रीज बाय 800 करोड़ और ये जाके 1256 करोड़ पे पीक होएगा इन FY26. Though the debt is going to increase to fund the capex, but still like if you see the leverage position is very minimal, and we expect gross and net debt equity ratio at 0.6x and 0.3x respectively, and which is having a comfortable leverage position on the balance sheet of the company. So taking into this consideration, company की जो current installed capacity है वो करीब 11,75,000 tons per annum है, वो बढ़ के 14,95,000 tons per annum हो जाएगी. So having capacity increase of more than 25% in FY26. एंड इसी के कारण कंपनी ने जो FY25 की जो सेल्स की थी तो करीब 3.7 लाख टन्स थी, एंड वी एक्सपेक्ट दिस टू गो अप टू 4.7 लाख टन्स इन FY26 ऑन द बैक ऑफ एग्जिस्टिंग यूटिलाइजेशन एंड एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज. और ये जो दो रैशनल्स जो मैंने बताया आपको, इन दोनों की जो सेल्स वॉल्यूम है वो FY27 से आना स्टार्ट होगी, एंड इसी की वजह से from 4.7 lakh tons to FY26 में we expect to achieve will go up to 6.3 lakh tons per annum and 6.8 lakh tons per annum in FY27 and FY28 on back of these two capacity additions. So ये थे दो रैशनल्स. अब हम चलते हैं तीसरे रैशनल पे. सो अभी जो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफी रोबस्ट है, एंड एज ऑफ June 25 कंपनी की ऑर्डर बुक करीब 3,500 करोड़ है, and the company expects to execute over a period of 6 to 12 months. So ये एक कंपनी की रोबस्ट ऑर्डर बुक है. सेकंड, कंपनी के पास काफी स्ट्रॉन्ग बिड पाइपलाइन है ऑफ ₹15,000 करोड़. इसी की वजह से कंपनी की जो आगे की रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है हमें. एंड एडिंग ऑन टू दिस, कतार एनर्जीज की जो LNG अप्रूव वेंडर लिस्ट है उसमें मान इंडस्ट्रीज का नाम इंक्लूड हो चुका है टू एक्सेस टू LNG इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, एंड इसी के थ्रू companies strengthening its global reputation through strategic certifications, market clients and diversified project pipeline. एंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी के पास करीब जो सेल्स है वो करीब 30 नेशंस के थ्रू स्प्रेड आउट है, एंड इट इज हैविंग अ रोबस्ट मार्केट क्लाइंट्स सच एज IOCL, HPCL,
शेल, ONGC, कुवैत ऑयल कंपनी। सो ये था थर्ड रैशनल कंपनी का। अब चलते हैं फोर्थ रैशनल पे। सो ये दोनों जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड हमने बात की कैपेसिटी एडिशंस, इसी के थ्रू कंपनी की ब्लेंडेड एबिटा पर टन है वो वी एक्सपेक्ट दैट टू इम्प्रूव, बिकॉज इन दोनों सेगमेंट जो कि स्टेनलेस स्टील है वहां हमें एक्सपेक्टेड की कंपनी करीब 17 to 20% ऑफ एबिटा मार्जिन क्लॉक करेगी। एंड जो एस्ट्रा प्लांट है जो सऊदी में लगेगा वहां 12 to 14% एबिटा मार्जिन स्ट्राइक करेगी। और कंपनी का जो ओवरऑल ब्लेंडेड मार्जिन है वो करीब सिंगल डिजिट में 8 to 9%। इसी के कारण कंपनी का एबिटा मार्जिन आगे जाके नेक्स्ट 2 years में डबल डिजिट मार्जिन होने की आवश्यकता है। एंड थ्रू दिस करेंटली एबिटा पर टन जो है कंपनी का FY25 में वो करीब 8,086 रुपीज था। And this we expect, to increase to 9,084 and 10,905 in FY27, FY28. In FY26 कंपनी की जो एबिटा पैटर्न है वो स्लाइट डिप दिखेगी, बिकॉज कंपनी की जो कैपेसिटी एडिशन है वो ऑन स्ट्रीम आ चुकी होगी बट कोई सेल्स नहीं होगा। सो दैट विल बी अ टेम्पररी ब्लिप। एंड देन फ्रॉम FY27, FY28 आपको दिखेगा कि कंपनी की जो एबिटा पैटर्न है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है टू 10,905 per ton in FY28. And the last rationale is we have is monetization of non-core asset. So during 4Q FY25 मान इंडस्ट्रीज ने अपनी जो नॉन कोर एसेट थी उसको मोनेटाइज कर दिया है, और जिसका नाम था मेरिनो शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। एंड इसी ट्रांजैक्शन के कारण कंपनी ने एक डीड ऑफ असाइनमेंट एग्जीक्यूट किया है और उसे एक डेवलपमेंट राइट ग्रांट किया गया है फॉर अ लैंड पार्सल इन दी पैराडाइज ग्रीन स्पेस LLP ग्रुप। एंड कंपनी को करीब अपफ्रंट कंसिडरेशन रिसीव हुआ ऑफ 70 crores। एंड इसी के साथ कंपनी को 30% ऑफ दैट एरिया विच इज अराउंड 4,50,000 square feet of RERA carpet, both commercial and residential, allot किया जाएगा। And we expect company to raise to get a share of rupees 650 to 700 crores over a period of 5 to 6 years. So on an average we expect कि कंपनी की जो जो कैश फ्लोज है वो करीब 80 to 100 crores के रेंज में ऐड होती रहेगी in coming years. It may be it may not be on an average rational figure, it may be up and down, but overall जो revenue potential है वहां से जो कैश फ्लो रहेगा वो करीब 650 to 700 crores है। और ये जो point है, like this we have not incorporated in our financial model because we are waiting for further clarity for the company, and once the cash flows start hitting the P&L, we'll include it in our further result updates. So ये थी 5 कंपनी की इन्वेस्टमेंट रैशनल। so इसी के कारण we like this company on the back of capacity addition, due to which it will lead to enhancement in EBITDA per ton and cash flows through monetization of non-core asset and GST rebate. To sum all, this was the investment rationale. Now I would like my colleague Shubham to explain you on the industry growth prospect. Yeah, thank you so much, Harsh, for explaining beautifully about the company and its rationales. So, just to give a idea of how to read the report. So, when you look at the report first, so as Harsh explained, that this is the overall company overview about the company. These are some basic data points about the company, or what segment industry it operates in, what is its NSE code, and all of those details. Here you can see the target price and our expectations. Here is a really quick summarized version of the investment rationales that Harsh explained. So let's say you are in a rush to go through the reports, so you can come over here and you can understand why we are recommending the stock. So moving further, Harsh has explained all these investment rationales. These are also a bit summarized. So अगर आपको और डिटेल में इनके बारे में जानना है तो आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पर ही इन डिटेल ये जो सारे रैशनल्स है वो इन डेप्थ है। जितना इन डेप्थ हर्ष ने भी समझाया आपको, उतना ही इन डेप्थ यहाँ पर जॉट डाउन किया हुआ है। यू कैन go through this to understand the company much more better in detail and to understand our assumptions about the company and our estimates. So moving forward, अब इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो आप जैसे ही नीचे आएंगे इंडस्ट्री ओवरव्यू के रैशनल्स के, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इंडस्ट्री साइज एंड अपॉर्चुनिटी, विच इज इंडस्ट्री ओवरव्यू का पेज। तो हियरिंग वी ट्राई the business that the company operates. So now to continue with,
जैसा हर्ष ने एक्सप्लेन किया, एक जो कंपनी है वो दो सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। जो पहला है वो है कार्बन स्टील लाइन पाइप, जो उसका एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, उसमें आते हैं एल्सो पाइप एंड ईआरडब्ल्यू पाइप। ठीक है, केस वगैरह जो एक्सप्लेन किए, मैं थोड़ा और वापस एक चीज दे दूंगा। And the second thing is the company is expanding into stainless steel pipe fittting. So this industry overview part we have divided it in a such a way कि वो एक स्टोरी लाइन कंटिन्यू रहे आपको रिपोर्ट करते समय में। पहले आपको जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है इनका कार्बन स्टील लाइन पाइप्स का, उसके बारे में इंडस्ट्री ओवरव्यू है, एंड उसके पीछे आपको स्टेनलेस स्टील पाइप का इंडस्ट्री ओवरव्यू मिल जाएगा। So now we will continue with the industry overview. So first we'll start with carbon steel line pipe. ये जो pipes होते हैं, they are mostly used in oil and gas हो गया, water, petrochemicals, automotive and construction, ये सब जो industry है इनमें इनका application होता है। So now we'll see the types of carbon steel line pipes. तो उसमें तीन pipes होते हैं, ELSO, HSO and ERW. तो ELSO pipes होते हैं वो high pressure application जैसे oil and gas, ट्रांसमिशन इसमें यूज होते हैं। एसओ जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट में होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है, एंड जो ईआरडब्ल्यू पाइप है वो ऑयल एंड गैस, केमिकल्स एंड स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन में यूज होते हैं। नाउ व्हेन वी लुक इन द रिपोर्ट, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो और इन डेप्थ यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। यू कैन रिफर दिस पार्ट ऑफ द रिपोर्ट अगर आपको और इन डेप्थ जानना है इस इंडस्ट्री के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। Now we'll see कि why industry grow करने वाला है। First point is कि इंडिया का जो पाइपलाइन मार्केट है, मतलब जो पाइप ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्ट होता है इंडिया में, वो जो मार्केट साइज है वो कैलेंडर ईयर 24 जो कि 2024 में इट वाज वैल्यूड एट अराउंड 18.1 बिलियन, एंड ये प्रोजेक्ट किया गया है कि 2031 तक ये 28.9 बिलियन तक रीच कर जाएगा। तो ये जो पीरियड है 2024 से 2031, इसके बीच में ये जो इंडस्ट्री का साइज है, जो पाइपलाइन मार्केट का साइज है टुवर्ड्स द ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये 6.9% के कीगर से ग्रो होगा। एंड ये ग्रोथ के पीछे के जो मेन ड्राइवर्स होंगे वो होगा कि इंडिया में given the huge population that we have, the energy demand will see a huge rise, and उसके लिए ये इंडस्ट्री या फिर ये जो पाइपलाइन मार्केट है वो ग्रो होगा, एंड इसके वजह से प्लेयर्स लाइक मान इंडस्ट्रीज विल बी अ बेनिफिशियरी। सेकेंड इज द गवर्नमेंट का जो पुश आ रहा है, जिसके अंदर दे आर टारगेटिंग के नेचुरल गैस का जो शेयर है वो अपने एनर्जी स्पेक्ट्रम में दे आर trying to increase it to 15% by 2030. So that is also the second growth driver behind the industry growth. And third would be that as and when the population starts growing, the energy requirements increase, and that is the reason why जो pipeline installments होंगे वो बढ़ेंगे, and companies like my industry will benefit. The second main reason why the industry will grow is that जो वाटर सेक्टर है वहां पे भी पाइपलाइन का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, एंड द रीजन बिहाइंड इज दैट जो हमारी कंट्री है इट कंटेन्स नियरली 18% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। तो जितने भी लोग हैं दुनिया में उसमें 18% इंडिया में रहते हैं, पर सामने आप कंपेयर करोगे तो दुनिया की जितनी वाटर रिसोर्सेज है उसका सिर्फ हमारे पास 4% है। तो देयर इज अ मैसिव मिसमैच बिटवीन वाटर सप्लाई एंड वाटर डिमांड दैट वी हैव, एंड इसलिए आप ये ग्राफ भी देख सकते हो, इसके अंदर दिख रहा है क्लियरली जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है, मतलब एक आदमी को पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, एंड 2050 तक वो सिर्फ 1140 क्यूबिक मीटर तक का पानी एक सिंगल आदमी को मिलेगा। So that means कि although we are not water stressed scarce right now, we are definitely water stressed. So ये जो चैलेंज है उसको टैकल करने के लिए इवन आवर गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इन सम ऑफ देयर इनिशिएटिव्स वेयरइन वो वाटर कंजर्वेशन की तरफ बात करते हैं, एंड सम ऑफ दोज इनिशिएटिव्स आर जल जीवन मिशन, जिसकी फंडिंग फिलहाल के लिए थोड़ी ड्रॉप हुई थी, बट थोड़ा द इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टिंग के नॉर्मलाइजेशन आएगा एंड फंडिंग थोड़ा रिलीज होगा। सो दैट मीन्स दैट द टफ टाइम फॉर द इंडस्ट्री जो ये लास्ट 2 क्वार्टर में थे वो वी बिलीव हैज gone back, and अभी से थोड़ा normalization start हो जाएगा in fundings, and the companies will again start receiving those tenders and orders, जिसकी वजह से उनका profitability growth आ सकता है। So moving on, ये टेबल में आप देख सकते हैं जो अलग अलग इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, उनका क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है।
तो फर्स्ट इज जल जीवन मिशन, तो उसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव इज जो रूरल हाउस होल्ड्स है उन वो घर घर तक टैप वाटर प्रोवाइड करना है। सिमिलरली जो दूसरे इनिशिएटिव्स है उनका नाम लिस्ट किया गया है, वो क्यों, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी यहाँ पे लिस्ट किया गया है। सो दिस आर द टू रीजन, जैसे कि ऑयल एंड गैस का डिमांड बढ़ने वाला है, उसकी वजह से पाइपलाइन का डिमांड बढ़ेगा। एंड सेकेंड, वाटर स्कैरसिटी के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिया है जो हमें स्कैरसिटी फेस ना करना पड़े, इसलिए पाइपलाइन का डिमांड और बढ़ेगा। तो ये दो रीजंस है जिसकी वजह से वाटर पाइपलाइंस और ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस का डिमांड बढ़ेगा एंड मार इंडस्ट्रीज विल बेनिफिट। सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है कंपनी का कार्बन स्टील लाइन पाइप, इसका क्या ग्रोथ दिख रहा है इंडस्ट्री में। द मूविंग ऑन, जो कंपनी सऊदी अरेबिया में प्लांट एस्टेब्लिश कर रहा है फॉर स्टेनलेस स्टील पाइप, उसका क्या ग्रोथ है। सो फर्स्ट, स्टेनलेस स्टील पाइप जो होते हैं वो दो टाइप में डिवाइड हो सकते हैं। फर्स्ट इज सीमलेस एंड वेल्डेड। जो सीमलेस होते हैं वो एक सीम नहीं होती उनमें, एंड दे आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग बिलेट्स, स्टील बिलेट्स जो होते हैं उस स्टेनलेस स्टील के बिलेट्स होते हैं उससे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। एंड वेल्डेड पाइप जो होते हैं वो थोड़े जो एनवायरमेंट्स होते हैं जिसमें हाई प्रेशर झेलना होता है, वहां पे ये वेल्डेड पाइप्स यूज होते हैं। हाँ, ये था जो मेन डिफरेंस बोल सकते हैं। व्हेन वी लुक एट दी demand drivers for this industry, we'll see that growth drivers जो होगा global market में is that there has been rapid urbanization, जिसके वजह से housing sector has seen a boom, जहाँ पे you need pipes जहाँ पे हाउसिंग डिमांड को मीट कर सके, जहाँ पे कोरूजन नहीं होना चाहिए, तो दैट इज वेयर स्टेनलेस स्टील पाइप्स कम इनटू प्ले। फिर इंडस्ट्रियल एक्सपांशन हो रहा है क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, कंट्रीज हैव टू be proactive to develop themselves, and second, water infrastructure बहुत ज़्यादा emerge हो रहा है because everyone realizes how important it is to have water resources in hand. So इसलिए जो stainless steel pipe का market है वो भी grow हो रहा है। So when we talk about in terms of statistics, 2023 में जो global market था for stainless steel pipes and tubes, it was around 3.1 million tons, and 2028 तक ये forecast किया गया है कि ये ग्रो होके 3.75 मिलियन टन का हो जाएगा। तो ये जो केगर होगा ग्रोथ का, दैट विल बी अराउंड 3 to 4%। एंड इसमें करंटली जो ग्लोबल डिमांड में सबसे बड़ा कंज्यूमर है दैट इज चाइना, जिसका अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द ग्लोबल डिमांड जो है वो चाइना से आता है। व्हेन वी मूव ऑन टू द डोमेस्टिक मार्केट, 2024 FY24 में जो डिमांड थी दैट वाज 0.32 मिलियन टन, एंड वो फोरकास्ट की गई है FY29 तक 0.47 मिलियन टन तक वो ग्रो होगी, विच इज अ केगर दैट इज हायर देन द ग्लोबल मार्केट। ऑब्वियसली बेस इफेक्ट थोड़ा रहेगा इसमें, बट डोमेस्टिक केगर आप देखोगे तो दैट इज नियरली 6 to 8%। एंड इसमें जो ग्रोथ ड्राइव करेंगे वो की सेक्टर्स होने वाले आपके ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, केमिकल्स, फूड एंड बेवरेज। फूड एंड बेवरेज इसमें स्टेनलेस स्टील का बहुत ज्यादा यूज होता है पैकेजिंग वगैरह में, सो दैट इज अनदर ड्राइवर फॉर दैट। सो टू समराइज, जो स्टेनलेस स्टील पाइप्स होते हैं वो सीमलेस और वेल्डेड होते हैं। सीमलेस पाइप जो होते हैं वो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं। और ये जो सीमलेस पाइप्स है इसका ही फैसिलिटी मान इंडस्ट्री सऊदी में एस्टेब्लिश कर रहा है। एंड सेकेंड टाइप होता है वेल्डेड पाइप, which is used in low pressure and less corrosive applications. So ये जो इंडस्ट्री डेटा था आपने देख लिया, तो what can we infer from this? So we believe my industry can benefit from this India's pipeline expansion in both the sectors, oil and gas or water. And similarly, global infrastructure boost चल रहा है, but especially in Middle East like Saudi Arabia itself. तो वहाँ पे भी हाई डिमांड होने वाला है फॉर स्टेनलेस स्टील पाइप्स, एंड इसलिए कंपनी भी प्लांट सेटअप कर रही है, एंड इवन जो पीयर्स है वो भी सेटअप कर रहे हैं। एंड मूविंग फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनल बिजनेस जहाँ पे थोड़ा रिलेटिवली कम मार्जिन होता है, तो कंपनी इज मूविंग इनटू हायर मार्जिन स्टेनलेस स्टील पाइप प्रोडक्ट, जहाँ पे नीश इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को केटर करेगा, एंड इसलिए वो हायर एबिटा मार्जिन कमांड करता है। एंड ऑब्वियसली द कंपनी मोस्ट इम्पोर्टेंटली हैज API सर्टिफिकेशंस, जिससे वो ग्लोबल ऑयल एंड गैस मेजर्स को केटर कर सकता है। सो दैट वाज अबाउट द इंडस्ट्री पार्ट। नाउ ओवर टू हर्ष। So coming on to the financial overview and valuation.
सो जो हमने प्रोजेक्शंस किए हैं हमारे बिजनेस मॉडल के हिसाब से, सो वी एक्सपेक्ट रेवेन्यू, एबिटा एंड नेट प्रॉफिट टू ग्रो एट अ CAGR of 20.9%, 35% and 38.1% between FY25 to FY28 to rupees 6,199 crores, 741 crores and 404 crores respectively. और इसका रीजन है क्यों? बिकॉज ऑन द बैक ऑफ एक्सपेंडेड कैपेसिटी और शिफ्ट टुवर्ड्स हाई मार्जिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। एंड समराइज करने के लिए जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टोटल केपेक्स है ये दोनों कैपेसिटीज के लिए वो अराउंड 1164 करोड़ है, विच इज फंडेड 30% टू इक्विटी, जहां प्रमोटर्स 40 करोड़ इंफ्यूज करेंगे एंड नॉन प्रमोटर्स ने 255 करोड़ इंफ्यूज कर दिया, विच इज 295 करोड़ ओवरऑल, एंड 70% इज थ्रू डेट, जहां से कंपनी जो है उनका पीक डेट ये साल में करीब 1256 करोड़ टच करेगा. But still, the company is at a comfortable leverage position because the gross debt is seen at 0.6 times and net debt at 0.3 times. And then moving forward, once these capacities come online and on the back of existing capacities, company की आगे की जो sales है वो बढ़ेगी, जिससे profitability बढ़ेगी and इसी के through free cash flows बढ़ेंगे and इसी के through net debt धीरे धीरे उनकी कम होगी because they'll repay the debt. सो एंड इसी के कारण हम जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी जो ROE है और ROCE है वो इम्प्रूव होएगी फ्रॉम 8.3% एंड 10.6% जो हम एक्सपेक्ट करते हैं FY26 में, to 11.3% and 15.2% in FY27 and to 14.4% and 20.4% in FY28. So ये था हमारे like discussion on Man Industries, where we explained you the business model, what are our key investment rationale, and my colleague Shubham explained you on the industry growth perspective. So thank you for taking out time, and now we'll move on to Q&A. So we'll wait for 2 minutes. आपके जो भी questions हो आप chat box में type कीजिए. We'll answer them one by one. So please kindly put your questions in the chat box. We'll wait for 2 to 5 minutes and then we'll start answering. Thank you. Yes, people, if you have any questions, you can kindly put them in the chat box. We'll answer them one by one. We'll wait for 2 to 5 minutes. Dear participants, if you have any questions, you can type in the chat box below, and then we'll answer them.
Yeah, so we don't have any questions regarding, from any of the participants. So like we would like to end the webinar over here. So thank you so much everyone for taking out time and attending the Non Industries webinar. Thank you.